Keep writing vectors. This will be there directly in the motion plane में आपको मिल जाएगा वेक्टर, सेपरेट टॉपिक है. ओके, सो नोट्स अच्छे से लिखो वानिया, एंड ट्राई टू डू योर सीबीएसई का अच्छे से पढ़ लो. ओके, वेक्टर्स का. सो ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी स्टडीड अबाउट वेक्टर बोल के जिस डेफिनेशन वी लर्न, बट हियर कंप्लीट चैप्टर ओनली पूरा करने वाला है वेक्टर्स का. ओके, सो वेक्टर मींस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू यू? वेक्टर मींस So it's something that cannot be measured that cannot be measured. like, properly. Everything can be measured. Tell me, Shreya, बोलो. It Vector has में magnitude and direction. both magnitude and direction रहने का. Vector देखो, any physical quantity has magnitude मतलब value रहने का and direction भी रहने का, and दूसरा one important point, it obeys the laws of vector addition. Then we can say it is a vector. लिखो मैडम. हमको आगे आने वाले लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ बोल के. टोटल टिल एंडिंग ऑफ द 12th क्लास तक पूरा वेक्टर्स यूज करने वाला है पूरा. ओके, एग्जांपल्स वी नो एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स. वानिया, कैन यू टेल वेक्टर्स का सम एग्जांपल्स which has both magnitude and direction? Any examples, you know? So displacement. Displacement, acceleration, velocity, this all comes under vector. And current नहीं है, current is a scalar quantity. Displacement, velocity, acceleration, these all vectors. Copied? Yes. Now, representation of vector. Representation of vector. Vector को how to represent? Vector को we represent as arrow. ऐसा ऐसा. This is one vector. Vector को we represent as arrow. Actually, this is called as tail. And this arrow वाला जो भी है उसको क्या बोलते हैं? Head बोलते हैं. Head. Tail and head. Okay. इस सर पर, you know, that is called head and this is called tail. Tail represents the magnitude or length. Length it represents. Length of the vector. Because it has both magnitude and direction, right? Magnitude is represented by the tail. Okay. Length or magnitude बोलते हैं. Or magnitude. Okay. Head will represent the direction. So this is a representation of vector. Example, suppose acceleration दिखाओ बोले तो you will put like this. Acceleration ऊपर head में ऐसा लगाने का. This is a vector. Okay, always in all case में you have to put like this. Velocity बोले तो you should not write only v. V is not velocity. V can be speed, right? So if you put arrow, that means it is velocity. It is vector quantity बोल के. Okay, टेक्स्ट बुक में कभी भी ऊपर arrow से तो that is a vector quantity बोल के. समझ में आया? Displacement का symbol is which symbol? Displacement. हाँ, होने वाला. Displacement का symbol. So S. S का ऐसा. So these are all examples of vectors. Okay. So tail and head बोलते. Tail is the that back side वाला, ये वाला, and head is okay. Now directions learn करेंगे. Directions आपको learn करना पड़ेगा किधर से क्या है बोल के. You know this directions, right? This is north. Downwards is south. This side is east. This is west. ये तो हमेशा आने का, very important. Options में आपको certain directions will give. Answer आ जाएगा, but options में north east, north west, north of west ऐसे बोलेगा. So that में problem हो जाएगा. So understand, north, south, east, west. Okay. You tell me northeast. This is the northeast direction. So angle कितना होगा?
कितना एंगल में रहेगा ये वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? ईस्ट से कितना है, नॉर्थ से कितना है? टेल मी हाउ मच फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हाउ मच फ्रॉम नॉर्थ टू, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? 45. 45. नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली सेंटर से 90 को परपेंडिकुलर, 90 का बाइसेक्टर, राइट? सो दिस वन. टेल मी वानिया, what is this direction is called as? Northwest. Northwest. And what is this direction is? Southwest. Southwest. And this southeast. All are 45 degrees with this. Okay. Now suppose मान लो I will give this direction. इसको क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? सपोज मान लो इट इज 20 degrees. Tell me what is this arrow? You told this one is northeast, sir. ये वाला किसको क्या बोलते हैं? Like east of northeast East, or south east, of northeast. south of northeast, no wrong. मानिए बोलो. एग्जैक्ट सेंटर वाला तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इधर और इधर सो क्या बोलते हैं? सो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो किधर से स्टार्ट हो रहा है? ईस्ट से द लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना. सो कैसे लिखने का? 20 डिग्रीज नॉर्थ, फर्स्ट राइट डेस्टिनेशन, बाद में स्टार्टिंग पॉइंट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. दिस वन नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन, ऑफ ईस्ट मीन्स ऑफ से मतलब स्टार्टिंग विल बी ईस्ट एंड किस तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. ऐसा लगाना है. समझ में आ रहा है? नाउ टेल मी सपोज दिस वन इज देयर 45 डिग्री सपोज. टेल मी इसको क्या बोलते हैं वानिया, बोलो. दिस लाइन को, दिस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग वेस्ट एंड डेस्टिनेशन इज नॉर्थ, राइट? सो क्या बोलने का? 45 डिग्रीज 45 degrees फर्स्ट डेस्टिनेशन राइट डाउन, नॉर्थ north of of west. वेस्ट. लिख लो 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट. See, always generally anti-clockwise angle we should measure always. Anti-clockwise we have to measure. So इधर इधर मान लो, इधर something wrong किया हम लोग. मान लो this is arrows like this. ऐसा 45 degrees. Okay. समझ में आ रहा है? Okay. Now questions करेंगे इसका बेस में. You'll understand. You have to draw and tell me, show me the picture. डायरेक्शन ड्रॉ करो. 3 units due 30 degrees north of east. 3 units means मान लो 3 सेंटीमीटर्स होने दो, 3 मीटर्स होने दो, ऐसा ड्रॉ करो. वानिया, you have to draw 3 units 30 degrees north of east. मतलब नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर लो. फर्स्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. हाँ. नाउ 3 units मीन्स 3 सेंटीमीटर्स मान लो. इट कैन बी मीटर्स, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स मान लो. हाँ, आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर्स किधर से ड्रॉ करने का, कैसे ड्रॉ करने का? दिखा के दिखाओ. नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ऑफ मीन्स ईस्ट के, ईस्ट स्टार्ट करने का, नॉर्थ की तरफ जाने का. You are always putting anti-clockwise is positive direction. Clockwise दिया तो anti माइनस में आएगा. ओके. एंटी क्लॉकवाइज में लगाना का ऑलवेज एंगल. हो गया आपका? Sir, we just make a line, right? हाँ, लाइन में ड्रॉ करके दिखाओ. फिनिश था. हाँ, तो आपका हो गया. दिखाओ, ऐसा दिखा दो. I हाँ, don't know. yes. Is the 3 centimeters right? हाँ, 3 centimeters. 3 units means 3 centimeters line.
So should I show? लिख दिया ओके चलो नेक्स्ट आप दिखाने इस पर हाँ 4 units 60 degrees north of west नॉर्थ ऑफ वेस्ट वेस्ट से स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ जाने का एरो विल कीप लाइक दिस राइट वेस्ट से स्टार्ट करके ऐसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट ओके 60 degrees will be. And this magnitude is how much 4 centimeters units is 4 centimeters But तो sir, मेरा हाँ didn't you say it was anti-clockwise? हाँ सी आपको इसका डायरेक्शन देखो माइनस इफ यू गो फॉर दिस डायरेक्शन उल्टा मतलब इनडायरेक्टली व्हाट इज द मीनिंग दैट्स वन टेल मी इनडायरेक्टली दिस एंगल इज सो मच 120 degrees right Yes. indirectly that is the meaning 120 degrees में है बोल के either you can write like this for 60 degrees or 120 degrees से लिख सकते हैं माइनस वाला दूंगा then you will understand okay ये अंडरस्टूड है ये तो ये वाला जो भी है वो डालो 60 degrees से ये वाला नेक्स्ट वो आगे वाला भी मिस्टेक किया होगा ना हम लोग उल्टा कर दिया ना 45 degrees इधर कट ओनली this one cut okay he's telling that from west से start करो and go anti-clockwise in this direction right clockwise direction okay next इसका बोलो 75 degrees west of south इजी है ना 75 degrees west of south साउथ से वेस्ट जाने का दिखा वनिया हाँ 4 centimeters वेस्ट एंगल नहीं लगा रहा है एंगल लगाओ फ्रॉम वेट वेट यू टू पुट वेस्ट ऑफ साउथ साउथ से वेस्ट से लगा के सॉल्व करो हाँ चलो नो ये करो 4 units minus 45 degrees south of east Wait, so where will the angle come? एंगल कैसे फॉर्म होगा वही है इन थर्ड क्वाड्रेंट देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राइट सो साउथ से वेस्ट जाने का सो साउथ से वेस्ट जाके एंगल दिस इज हाउ मच 75 degrees साउथ वेस्ट ऑफ साउथ साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है 75 degrees ओके हाँ नाउ ड्रॉ करो नाउ 45 degrees साउथ ऑफ ईस्ट माइनस 45 degrees बोला माइनस 45 degrees तो मीनिंग क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 units 45 degrees साउथ ऑफ ईस्ट सो ईस्ट से साउथ की तरफ जाने का देखो माइनस 45 degrees देखो क्लॉकवाइज जा रहा है ना ऐसे जा रहा है 45 degrees बोले तो ओके understood So clockwise it's negative? Or देखो जो क्लॉक घूमेगा दैट इज क्लॉकवाइज एंड ये वाला एंटी क्लॉकवाइज राइट
जनरली हम लोग एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करने वाला है। अगर देयर इज पॉजिटिव डायरेक्शन वी आर टेकिंग जनरली, नेगेटिव दिया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जाने का, ऐसे जाने का, गाड़ी घूमते ना ऐसा उसी डायरेक्शन में जाने का। ओके नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी हैव सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर, वो लिटिल बिट आपको लर्न करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज पैरेलल वेक्टर्स। Okay, vectors, parallel vector. What is the meaning of parallel vectors? Means suppose two vectors parallel, name itself fitting है। Parallel vectors means दो vector parallel है तो they are parallel vectors। मतलब suppose मान लो A vector and B vector is there, they are parallel, right? So therefore they are parallel vectors। Okay, so angle between them is how much? Theta is how much? दोनों vector are in the same direction, angle is how much? 0. 0 degrees। दोनों same direction 0 degrees, opposite direction 180 degrees। okay, so these are called as parallel vectors। short form में लिख लो, no need of writing इतना बड़ा लंबा लिख के। okay, second one anti parallel vectors means nothing but angle them कितना होगा anti parallel means this is one, this is one, A vector and B vector। so anti parallel में angles are 180 degrees, right? ये ओवरलैप करूंगा ना इसके ऊपर लिखूंगा, सो एंगल इज 180 डिग्रीज। एक इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है। सी दैट वेक्टर कैन बी फोर्स, दैट कैन बी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनीथिंग दिस वेक्टर। पर एरो से हम लोग खेलने वाला है पूरा। आया नेक्स्ट वन, कोलिनियर वेक्टर्स। टेल मी व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स मींस? कोलिनियर वेक्टर्स मींस They'll देखो start at the same point. स्टार्ट ऑफ सेम, नो वेक्टर्स हैविंग द सेम लाइन, मतलब सेम डायरेक्शन सेम ऐसा है तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। सेम लाइन में है ना, देखो दे आर लाइन इन द सेम लाइन, दैट्स व्हाई दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ओके नेक्स्ट, वेक्टर सेम लाइन में बोल के लिखो, वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स लिखो, vectors lying on the same plane, vectors lying on the same plane। see one vector like this is there, one vector like this is there, A vector, B vector, they are lying in the same plane or not? देखो this is x plane, x, this is y, so xy plane में only two vectors are there, right? so that's why they are coplanar। coplanar means vectors lying on the same plane। it is board में है ना, it is not like this, right? so they are same plane, coplanar बोलते हैं। next, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स उसका ऐसा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इज 0। लिखो, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। okay, next one, unit vector। unit vector means name is of indicating unit। So could you call parallel vectors also zero vector? no मतलब आंसर जब सीटेल में, suppose example I'm telling, suppose F1 force is given as 5 newtons, I am pulling the box like this। okay, other vector I given F2 vector as 5 newtons। tell me net force कितना होगा? net force is how much? मतलब box will move this side or this side? So if the box wouldn't move, that will move, that means net force acting on it is zero. 0। so we should say force is a vector quantity, right? we should not say 0, we should say 0 vector। okay, 0 वेक्टर बोलते हैं बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0। इसके एग्जांपल में ऐसे एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। 0 मतलब वेक्टर को 0 नहीं बोलने का, 0 वेक्टर बोलने का। Yes. पैरेलल बोल तो क्या है? पैरेलल मींस दो वेक्टर्स एंगल इज 0। हियर एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है।
हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स इज 0 बोल के, ओके, वो वाला एंगल दोनों सेम डायरेक्शन वाला है, ओके, पैरामीटर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर मींस, आपको नेम सेल्फ इंडिकेटिंग, उसका मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स पूरा भर भर के आने वाला है, उसका फॉर्मूला लिखो। सी, एक वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड को वी रिप्रेजेंट एज मॉड ए, मैग्नीट्यूड को मॉड ए से रिप्रेजेंट करेगा, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, ओके, दैट यूनिट वेक्टर का ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट एज ए कैप बोलते हैं उसको, ए कैप। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए कैप? ए कैप का फॉर्मूला इज वेक्टर ए बाय mod a, vector a by mod b. This vector is nothing but, this is nothing but unit vector, unit vector. इसका कुछ काम नहीं है, यूनिट वेक्टर का कुछ काम नहीं है, उन्हें डायरेक्शन दिखाने के लिए काम है। सपोज वन, या सपोज यू आर गोइंग, एक फंक्शन में जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू वन फंक्शन, ओके, यू एंड योर फ्रेंड्स आर गोइंग, ओके, आपके पास आप वो लोग पूछा आपको रास्ता मालूम है, बोल तो हाँ मुझे पूरा मालूम बोल के आप जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, बीच में कंफ्यूज हो गया, बीच में रास्ता भूल गया, ओके, आपके पास फोन नहीं है, ओके, कोई जनाब, कोई पर्सन्स भी नहीं है पूछने के लिए, देन क्या करेगा? व्हाट विल डू? सपोज नो वन इज देयर टू आस्क, और फोन इज नॉट देयर, यू हैव टू गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस, कंपल्सरी जाना पड़ेगा, देन व्हाट यू विल सी एंड व्हाट यू विल डू एट द टाइम? इमेजिन। I would try to go back and see if there's other people to ask the directions. वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंपल्सरी आने का, फिर से घर जाके फोन लेके आएगा, वो कितना 60 किलोमीटर जाकर आया, हाँ, आप क्या करेंगे उससे? लास्ट ईयर गर्ल टोल्ड आई विल ट्राई सर फर्स्ट, ओके। सो जनरली क्या करे, बोर्ड्स देखेगा, आप बोर्ड्स में वो उसमें लिखा होगा पंजा गोटा दिस साइड, सोमाजी गोटा दिस तरफ, ऐसा लिखेगा ना, उसके डायरेक्शन के लॉन्ग यू विल गो फर्स्ट, दैट इज द थिंग। वो बोर्ड का फंक्शन क्या है, उसका कुछ रोल क्या है, उसका कुछ नहीं है, उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए उसका पर्पस है। सेम थिंग यूनिट वेक्टर का, वो एक ही काम है, एक ही काम है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। एक गाड़ी इस तरफ जा रहे कि दूसरा पर्सन आएगा ना, वो देखकर वेक्टर देखकर समझ में आ जाएगा कि वो गाड़ी वेंट लाइक दिस बोल के, ओके। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह करने समय आपको समझ में आएगा, ओके, हो गया, अंडरस्टूड, क्लियर, यस। चलो, नो नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, इक्वल मींस आपको दो वेक्टर्स, देखो, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड इफ दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम रहने का, डायरेक्शन भी सेम रहने का, then only we can say they are equal vectors. Suppose मान लो one vector is like this, x and y axis and x axis, one vector is like this, other vector is like this. Tell me they are equal vectors or not equal vectors? They are equal or not equal? Equal के लिए magnitude should be same, direction also should be same, so they are equal vectors, okay। देखो magnitude मतलब length should be same and direction also should be same, they are equal vectors। equal vectors, देखो, these were equal vectors, this were no, because even though direction is same, magnitude not same, that's why they are not equal vectors, okay। equal vector का एक specialty is there, equal vector का एक specialty is there, देखो क्या है, this property allows us to move to a position parallel to itself in a diagram without affecting the vector। so इस equal vectors अगर है तो इसको मैं ऐसा parallelly I can shift to this side, कुछ गलती नहीं है, I can shift from this parallel vector like this to like this, parallel to itself I can move। the diagrams में एक वेक्टर ऐसा diagrammatically they will give like this, इसको parallel shift करो बोले तो आपको simply ऐसा parallelly you can shift anywhere, okay। suppose one vector is like this, I can shift this vector ko, I can take to here, no problem, I can take to here, I can take to here, but I cannot change the symbol, I cannot put here like this, okay।
I can shift like this, but I cannot shift like this. Parallel I can shift because of equal vectors. Equal vectors में ही ऐसा काम होगा. Unequal vectors को इधर उधर करके we cannot change. So a vector can be shift parallelly by itself always. Understood? ये प्रॉपर्टी आपको आगे समझ में आएगा. चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस ऑल आपको समझ में आने का. व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? देखो एंगल, आई विल गिव डायग्राम. टेल मी, दिस ए वेक्टर, बी वेक्टर, 30 degrees, a vector and b vector. Angle is 30 degrees. चलो 45 degrees. Tell me, what is the angle between these two vectors? One ये बोलो, what is the angle between these two vectors? So 30 degrees. What is the angle between these two vectors? So 45 degrees. But answer wrong. देखो, angle we should not take any two vectors के बीच में नहीं लेने का. ऐसा कौन सा लेने का रूल क्या है? आपको टेल टू टेल वाला ओनली वी शुड टेक. वन लिसन, आपको दिस टेल राइट, टेल टू टेल वाला एंगल ओनली वी शुड टेक ऑलवेज इन वेक्टर्स में. वेरी इंपॉर्टेंट. वन क्या कर रहा है? मोबाइल से क्या खेल रहा है? ओके, No, sir, I'm getting it. या लिसन केयरफुली. एंगल शुड बी टेकन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू टेल वाला एंगल ओनली शुड टेक. देखो, वेदर टेल टू टेल इज कनेक्टेड, हेड टू टेल इज कनेक्टेड. इसमें दिस इज कॉल्ड हेड, this is called tail. Head and tail is connected, we cannot take this angle. Okay, here देखो, tail and tail is connected, then theta is here 30 degrees. This is right, this angle is right. So angle between two vectors always we should take tail to tail only. Tail to tail angle only we should take always. Okay, now either is there angle कैसे find करेंगे? देखो, this is one vector, this is vector they given right originally, b vector, a vector. मैं क्या करूंगा? इसको I can shift parallelly, I can shift any vector parallel to itself, right? So मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा इसको extend करके ऐसे लेके आऊंगा. a vector को I extended like this and I brought, because I can shift parallelly to itself. Equal vectors है ना, parallel to itself. Okay, now देखो, this angle is 45 they given. Now देखो, now connected tail and tail, इसका एंगल कितना होगा? This angle is how much? Approximately, the total is 180, right? This will be how much? 135, right? So the 135 is the answer. Diagrammatically थोड़ा wrong, but understand करो. समझ में आ रहा है? ये वाला आपको ये 135 ले लो शायद. Sir, but how do you know if it's a tail or a head? How can you tell? Tell me. How can you tell if it's a tail or a head? Yeah. Tail and head. देखो, what is tail? Tell me. This is called tail. This is head. Okay. This is one vector, right? ऐसा दिया. Next vector ऐसा दिया ना? ऐसा दिया. Tell me. Head and tail is connected. Tail and tail is connected. So that's head and tail. Head and tail. So head and tail का angle we should not take always. आपको क्या करने का? इसको थोड़ा extend करके this angle you have to measure. देखो, if I extend like this, that the vector came like this. Now देखो, tail and tail is connected. This angle between we should take. Tail and tail का angle we should take always. Okay. So this is 35 मान लो, 135 मान लो. This will be 45 degrees is the answer, right? So 45 degrees is the answer. मतलब देखने में आपको एंगल छोटा लग रहा है ना, so this is 145 degrees. Understood? Angle between two vectors always we should take tail to tail only. We should never take head and tail. Okay? Total vectors में. इसमें आपको vectors में we are learning vector addition, vector subtraction and vector multiplication. If these three concepts are done, then chapter done, complete chapter done. क्या क्या पढ़ने वाला? टेल में वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, खत्म. ये हो गया तो वेक्टर्स कंप्लीटली हो जाएगा.
नो एडिशन वेक्टर्स करने वाले, हाउ टू ऐड. ऐसा नहीं कि सी सपोज 3 + 5 इज हाउ मच बानिया? 8. बट इन वेक्टर एडिशन में 3 + 5 can be anything. It can be 10, it can be 11, it can be 12, it can be 13. Okay. So vector addition अलग है, स्केलर एडिशन इज डिफरेंट. ओके, स्केलर एडिशन सिंपली आपको ऐड कर लेंगे. ओके, बट वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कैसा है क्या है बोल के. ओके, वी विल सी. वेक्टर एडिशन करने के लिए आपको 3 मेथड्स आर देयर. वेक्टर एडिशन को करने के लिए 3 मेथड्स आर देयर. What are the 3 laws? We can call 3 laws are there. What are the laws? One is parallelogram law, one is triangle law, one is polygon law of vector addition. Okay, 3 methods are there to, 3 laws are there to solve the vector addition. उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग है? वी आर यूजिंग ऑलवेज, मेजरली वी आर यूजिंग आपको पैरेललोग्राम ओनली. वी आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ करके ऑल क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. ओके, बट अंडरस्टैंड के लिए ट्रायंगल लॉ भी सीखेंगे एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम लोग सीखने वाला है. ओके, चलो इसका स्टेटमेंट क्या है, हाउ टू फाइंड, वी विल सी. फर्स्ट वन इज, लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसका स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो, क्या है इसका, कैसा करेंगे. when two vectors are considered to be adjacent sides of a parallelogram law with their tails meeting at the common point, then the diagonal of a parallelogram originating from a common point will be the resultant vectors. First लिखो, I will explain. इसका डेरिवेशन भी करने वाला है, then you will understand. लिख दिया. ओके, ओके. सी सपोज मान लो you have 2 vectors. A vector is there and tail to tail only we should connect. Always we should connect tail meeting at a common point. Always connect tail to tail only in parallelogram law. So one more vector is there. Suppose मान लो आपको B vector is there. फर्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे, बाद में डेरिवेशन करने वाला है. A vector B vector, angle between them is theta. Now देखो, since tail to tail connected, angle is this only we should take, right? Okay. So how to add the, I want to add this vector, 2 vectors को add करने का. Okay. फर्स्ट स्टेप क्या करने वाला है, we have to, these are like a parallelogram जैसा, name itself parallelogram law, right? Parallelogram बनाने का. So इससे parallel you draw one imaginary line vector
इससे यू ड्रॉ वन, इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन. नाउ देखो पैरेललोग्राम बन गया. पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? सो इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन, इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन. देन द कॉमन पॉइंट से द डायगोनल का, this diagonal represents the resultant vector. This diagonal will represent the resultant vector, and resultant vector is, how to represent resultant vector? A vector plus B vector. Okay, A vector plus B vector. What is the meaning of this one? We are doing vector addition and we got the resultant. Okay, so क्या करने का? A vector, B vector is given to you. Angle between them is theta. इससे you draw one parallel line. इससे you draw one parallel line. The resultant will from a common point. Say if you draw the diagonal का opposite direction ऐसे draw किया तो this is the resultant. And resultant is a vector. Resultant vector. You know vector has both magnitude and direction. Vector has both magnitude and direction. Now how to find magnitude, how to find direction, we will see. Okay. So first formula रन करेंगे. Magnitude का formula R is equal to under root, formula याद है ना? Under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the magnitude of R. This is the magnitude of R. लिखो. And direction कैसा आएगा? From vector A से कितना angle the resultant is there? That I call as beta. Vector A से कितना angle the resultant is there? That is called beta. Okay. Now the tan beta is equal to formula लिखो. This is A vector, B vector, right? So B से start करो. B sin theta by A plus B cos theta. This is the direction देगा. This is the direction. We get direction. Direction बोलते क्या है? From the A vector से कितना angle में the resultant is there. And this is the magnitude. Magnitude. Because R is vector quantity, it has both magnitude and direction. Magnitude formula को find करने के लिए A use करेंगे. Direction find करने के लिए A use करेंगे. B sin theta by A plus B cos theta. दो फॉर्मूला बैठ करो लास्ट. It is like A plus B whole square only, right? But cos theta add करेगा. Tell me मानिए R and tan beta का चाहिए. So for magnitude, R is square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. And 2AB cos theta. दूसरा एक काम करो, some books में they will give अल्फा ले लो so that आपको कंफ्यूज नहीं होगा. अल्फा ले लो, अल्फा so आपको टेंशन नहीं होगा. tan alpha is B sin theta by A plus B cos theta. B sin theta by A plus B cos theta. Tell me tan alpha formula. so B sin theta by A plus B cos theta. ऊपर sin theta आएगा, नीचे cos theta आएगा. Okay, you tell me. Say दो फॉर्मूला बोलो. R का फॉर्मूला. R is equal to under root A squared plus B squared plus 2AB cos theta. And tan alpha alpha is equal to B sin theta upon A plus B A cos theta. cos theta. Yes. Okay. ये फाइंड करके we can find anything, any direction में, any मतलब कितना magnitude we can find. Okay. Try करो. Suppose मान लो this is 5 units and this is 4 units. Angle between them is 30 degrees or 60 degrees. Now find the resultant. R find करो. Two vectors are given, 5 units and 4 units.
सो आर कैसे फाइंड करेगा? अंडर रूट ए स्क्वेयर, ए इज 5 राइट, 25 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 into 4 into 5 into cos theta, cos 60 is 1/2, 2 कैंसिल, कितना है आंसर? 45, 55, 61 ना, कितना? 20 प्लस 45, 55, 61, 61 है। तो इज द रिजल्टेंट। तो सिंपली आपको डायग्राम भी लर्न करना पड़ेगा। डायग्राम का डायरेक्शन किस तरफ आएगा देखो, इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन, इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन, रिजल्टेंट इज दिस वन। डायरेक्शन बार बार ऑलवेज ड्रॉ करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्शन लर्न करना पड़ेगा। ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अगर वो डायरेक्शन यू नो फर्स्ट 5 यूनिट से कितना एंगल द रिजल्टेंट इज देयर मींस अल्फा वी हैव टू फाइंड, tan अल्फा वी हैव टू फाइंड। ओके, ये 5 यूनिट से कितना एंगल इज देयर अगर पूछे तो दे यू हैव टू फाइंड अल्फा आल्सो। तो मैं तो फॉर्मूला आ गया ना, इसके डेरिवेशन भी पूछने वाला है एग्जाम्स में आपको। ओके, डेरिवेशंस। ओके, इसका डेरिवेशन लर्न कर लो, माने धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है वो एरो, क्या है। सपोज सी मीनिंग क्या है, टेल मी, आई विल टेल यू शॉर्ट फॉर्म में। सपोज एक बॉक्स इज देयर, ओके, आई एम पुलिंग दिस विथ 10 न्यूटन्स, दिस बॉक्स को आई एम पुलिंग वन मोर हियर 50 न्यूटन्स, वन मोर पर्सन इज पुलिंग दिस बॉक्स टू 50 न्यूटन्स। किस तरफ घूमेगा बॉक्स? अभी किस तरफ जाएगा? एग्जैक्टली 15 में जाएगा और समवेयर समवेयर बीच में जाएगा, क्या है? Central towards 15 Newton. हाँ, टूवर्ड्स एग्जैक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ये फॉल्ट है क्या? से एक बुक को वन पर्सन ऐसे पुल कर रहा है, वन पर्सन ऐसे पुल कर रहा है, सो किसका ज्यादा है उसका रिजल्टेंट विल बी मूविंग द डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल बी मूविंग दिस डायरेक्शन। वो रिजल्टेंट कितना फोर्स से बोले तो वी कैन यूज बाय पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट कितना फोर्स से बॉक्स जा रहा है बोलते वी कैन फाइंड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज करके वी कैन फाइंड। ओके, अगर एंगल पता चल गया तो वी कैन फाइंड द टू थिंग्स। ओके, एग्जांपल आई एम गिविंग। ओके, इसका डेरिवेशन लर्न करो, समझ में आएगा। डेरिवेशन सीखो, जल्दी हो जाएगा। देखो, दिस ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दिस इज गिवन। आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे पैरेलल यू ड्रॉ वन लाइन, इससे पैरेलली यू ड्रॉ वन लाइन, द रिजल्टेंट इज दिस वन, एंड आई कॉल दिस एज अल्फा, रिजल्टेंट के लिए। ओके, सो मुझे क्या है, आर फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पहले। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन, आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन, आई नेम ओ, ये दिस इज ए वेक्टर राइट, ए वेक्टर को ऐसे डाल रहा हूं। ओके, सो ओ ए बी सी एंड दिस इज एन। ओके, मुझे आर चाहिए, देखो इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सो दैट आई कैन आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आर। ओके, दिस एंगल इज थीटा, horizontal in this line, horizontal in this line is also theta, ये समझ में आया? थीटा, बिकॉज यू कैन यूज दे आर पैरेलल राइट, पैरेललोग्राम लॉ है ना, ये ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, you can use that one and theta theta. Okay, now tell me, this is b vector, this also b vector only, b only or not, right? Now you see in this triangle mein what is cos theta in triangle ANC? What is cos theta? Adjacent by hypotenuse, right? Adjacent is how much? AN by hypotenuse is how much? B, right? B vector. Therefore, AN is how much? Tell me. From this, AN is equal to B cos theta. देखो, AN is B cos theta. क्या आया इस तक? टोटल में सेम ट्राइंगल में वन, ये बोलो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय hypotenuse, So right? CN
by AC. Cn by AC. B, right? So therefore, what is Cn is equal to B sin eta. So Cn के जगह पे B sin eta. देखो, why we are finding, because I want to use Pythagoras theorem to find the, by using hypotenuse लगा के we can get the value of R. Okay. Now tell me, in the triangle ONC, देखो ONC बड़ा triangle में, tell me what is R square is equal to R square. This is hypotenuse, right? Hypotenuse square equal this square plus this square. Tell me इसका square कितना होगा? See, Cn square plus ON square. ये समझ में आ रहा है? Pythagoras theorem I'm using. Okay. Now, what is Cn square? Cn square is nothing but B sin theta whole square. So B square sin square theta plus what is ON? Tell me on here. This is A. This is B cos theta. What is ON? ON will be how much? This is A. This is B cos theta. So A A. plus B cos theta Yes, sir. whole square. Now solve karo. B square sin square theta plus A square plus B square. B square is B square cos square theta plus 2AB cos theta. This is R square. So R square is equal to, देखो B square I can take common this. So इधर B square common ले तो क्या आएगा? Sin square theta plus cos square theta plus A square plus 2AB cos theta. What is sin square plus cos square is 1, right? Sin square theta plus cos square is 1. Therefore, R is equal to A square को तो बेचर root आएगा. Root of, I am rearranging, A square plus B square plus 2AB cos theta. We got answer. Is the resultant. एक कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम बना के सॉल्व करने का. A square plus B square plus 2AB cos theta is answer. ये पूरा साइड मालूम है ना? साइड पूरा साइड कितना होगा? A plus B cos theta, right? This is the side. Okay, this is the magnitude we found. Magnitude we found. Tell me direction क्या होगा? Direction के लिए tan alpha, tell me. मानिए बोलो, what is tan alpha from the diagram? Tan alpha in this right angle triangle में, what is tan alpha? Opposite by adjacent. Adjacent is A plus B cos theta. So क्या होगा? By B sin theta by adjacent is how much? ON. A plus B, then नहीं, A plus B cos theta. A plus B cos theta. देखो आंसर वन स्टेप में आ गया. B cos B sin theta by A plus B cos theta is a formula. नीट में नहीं पूछेगा, बट आपको डायरेक्ट डेरिवेशन लर्न करना पड़ेगा आपको आईपी के लिए. तो पैरेललोग्राम में फर्स्ट थिंग आपको लर्न करना पड़ेगा, टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल. देन he will tell to find magnitude, direction find करो बोलते, use the formula r का and tan alpha का, we can get the things. चलो डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी ड्रॉ करके सॉल्व करने का. सो फॉर्मूला तो आ गया ना, r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. इसका पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाला है पूरा. ओके चलो. नो स्पेशल केसेस ले लो. सपोज मान लो थीटा इज 0 डिग्रीज. नाउ फाइंड r वैल्यू. वन ईयर थीटा 0 मीन्स दो वेक्टर्स are in the same direction. That's why angle is 0. Then find resultant. Find resultant. Root of formula में substitute करो. This is a vector, b vector, right? Root of a square plus b square plus 2ab cos 0. लगाओ and tell the answer. Sir, are there any other
Are there any? Is there anything else or is that it? No. Theta is 0 degrees. Find r using the formula. Root of a square plus b square plus 2ab cos कितना है? Cos theta is 0 degrees. Cos 0 is how much? 1. So r is equal to under root a square plus b square plus 2ab. I can write like this, under root a plus b whole square. Square root cancel. Therefore, the resultant is a plus b. मतलब whenever the both angles are in the मतलब angle is 0 degrees, both are in the same direction, simply add a plus b करने का, फिर से substitute करके सब कुछ नहीं करने का, only add कर देने का हो जाएगा. Special cases understand करो. When the both vectors are in the same direction, just add and find the resultant r equal to a plus b. Okay, and this is the greatest resultant. Greatest resultant. सबसे ज्यादा दो वेक्टर्स आर गिवन, एंगल 0 है तो दैट इज द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट. केस 2 करो. थीटा इज 180 लगो. आर वैल्यू फाइंड करो. 180 मींस व्हाट? वन वेक्टर इज लाइक दिस, अदर वेक्टर इज लाइक दिस. एंगल बिटवीन देम इज 180. नाउ फाइंड आर. cos 180 is -1. Sir, so a minus b. Yes, r vector r is a minus b, and this is the least resultant. Least resultant मतलब whenever दो vectors exactly opposite direction is the least resultant. Last one, theta is 90 का लगाओ. 90 means one vector is like this and other vector is 90 degrees like this. Now find करो r value. Cos 90 is 0. कितना बने? Cos 90 is 0. So root of a square plus b square plus 2ab cos 90. Cos 90 is 0, right? So this is answer. Root of a square plus b square. So आपको directly करने का, whenever both see when vector suppose they given like this. Tell me Vanya, suppose 3 units are given, 4 units are given. Tell me what is the resultant? दोनों को resultant will be. Sir, could you repeat? One vector is 3 units are like this. One vector. Other units also same direction में 4 units are there. What is the resultant? Resultant will be a plus b. A plus b मतलब a कितना है? A is 3. 3 4 plus plus 4, 6 7. 7. हाँ, पीपल क्या करेगा? अगेन दे विल सब्स्टिट्यूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 लगा के सॉल्व करके लास्ट में 7 बोलेगा. ऐसा नहीं. Whenever two vectors are in the same direction, simply add. Okay. Now opposite direction में क्या करेंगे? सेपरेट करने का. Opposite direction. एंड अगर 90 डिग्री से है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या तो आ जाएगा. भूल गया तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, अंडरस्टूड. तो इसका पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करने वाले हैं. फॉर्मूला पढ़ के रखो, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा विल सी.